questions on the coordinate geometry. And today, this is going to be the last day of this topic. Then I'll share the worksheet. You can practice on your own while we are learning the new topic from tomorrow onwards, inshallah. Okay. All right. So here's a question. The diagram. Do you want me to quickly go through the notes, or are you fine with it? Okay. It's okay, sir. All right. The diagram shows a rectangle A, B, C, D. Okay, now these are the keywords now, and they are very important. Rectangle. The moment you read rectangle, आपके दिमाग में फौरन से rectangle की सारी properties आ जानी चाहिए. Okay, there are going to be four angles of 90 degrees each, and opposite pairs they are of equal lengths. इस तरीके से करके. All right, where A is 3 2 and B is 1 6. Now the key to these questions is first make a plan, second execute it. Okay, before jumping off, like right away jumping onto the question, read the question, highlight the keywords, the important points, and then have a good look at it, and then make a plan. First of all, make a plan in your head and then execute it. Now, they have given you the coordinates of the 2 points A and B, which you can see on the diagram. If there is no diagram, I told you earlier, you make a sketch of your own. Okay, खुद से sketch बना लिया करें. अगर दिया हो तो अच्छी बात है. Find the equation of BC. So that's the line. BC is a straight line. You need to find out its equation. Okay, now first, let's just make a plan. किसी भी straight line की equation के लिए again आपके पास checklist थी वो क्या थी? You need a point from which the line BC is passing, and then you need the gradient of the line. Okay, what do you think about the two things here? Do you have the complete checklist? Do you have a point from which the line BC is passing? And what point is it? 1 6, which is the point B. So if we have the point, do we have the gradient? No, we don't, and we cannot even work out the gradient because I don't have the coordinates of C. Okay, now how to go about it? Let's make a plan here. This was a rectangle BC. There is a line parallel to BC as well. Have a look at it. AD. Do we know the coordinates of AD? We know the coordinates of A, but do we know the coordinates of D? Okay, we can't even relate the gradients of these two parallel lines. We only know the coordinates of these two. What is the relation of AB and BC? Perpendicular. They are perpendicular. So when the two lines are perpendicular, we know the relation of their gradients, that their product is equals to -1, or the gradient of the two lines, that like they are negative reciprocal of each other. So let's just work out the gradient of AB first of all. So my first step is going to be, I'm going to work out M of AB, which is going to be, if you want to do the tagging here, you can tag them as well. X1, Y1, X2, Y2. You know the formula, y2 minus y1, so 2 minus 6 over x2 minus x1, which is going to be 3 minus 1, negative 4 over 2, which is going to be negative 2. This is gradient of AB. Now you need to tell the examiner that how you are going to work out the gradient of BC. As AB is perpendicular. This is the notation for perpendicular. If you want to write it in words, you can write it, but if you are in rush, you can use this notation. If AB is, as AB is perpendicular to BC, therefore M of BC is equal to plus 1 over 2. Now the important thing over here, many students वो AB का gradient निकाल लेते हैं, उनको पता भी है कि वो negative reciprocal है, वो BC का भी निकाल लेंगे. Communication is important. आपने examiner को बताना है what are you doing. Okay, examiner needs to check your concept. Okay, M of BC equals to 1 over 2. So we know the gradient for this one is now 1 over 2. Now let's just work out the equation. We have a point and we have the gradient as well. So formula was y minus y1 equals m into x minus x1. Y minus y1
Now in y1 you need to put the y coordinate of the point through which the line BC is passing, which in this case is the point B. So it is going to be 6 equals m is 1 over 2 x minus x1 is the x coordinate, which is 1. So y minus 6 equals to 1 over 2x minus 1 over 2, and even if you want to leave it like this, that's fine. ठीक है, आप ऐसे भी छोड़ दें इसको तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट हमेशा y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कोशिश करें, अपना आंसर दें, दैट इज द बेस्ट वन, -1/2 प्लस 6. ओके, पेपर में आपको टाइम की जो है ना, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. -1/2 प्लस 6 कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा. हाउ वुड यू डू दैट क्विकली? जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं ना, जब भी एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन इकट्ठी आ जाए, आपने उनको सम अप करना है. इसको कैसे करेंगे? 3 होल 4/2. कैसे इसको करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को? 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10/2. बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको करना है. 2 6 जा 12, 12 माइनस 1. ठीक है, अगर ये प्लस होता तो 12 प्लस 1 कर लेता मैं. ठीक हो गया? 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/2 आ गया. मैं क्विक, आपको कैलकुलेटर के ऊपर जाने से बेहतर है आप दिमाग फौरन फौरन कर ले, सेव योर टाइम. 1/2x प्लस कितना आया था? ओ सॉरी सॉरी, 12 इट वाज -1. आई चेंज्ड इट एज अ प्रिकॉशन और फिर मैंने वही कैलकुलेट कर दिया. 11/12. 11/12. So this is the equation of the line BC. इसके साथ हम लिख लेते हैं y is equals to 1/2x plus 11/2. All right, this was the first part of the question. ये हमने कर लिया. अच्छा, next. Given that the equation of AC. Okay, they have given us the equation of AC. What is AC if you look at the diagram carefully? Hmm? AC क्या होगा आपके पास? Yeah, basically it's a diagonal of a, yes, it's a diagonal of a rectangle. शाबाश. तो इसकी इक्वेशन उसने दी हुई है आपको, and that equation is y equals to x minus 1. Find the coordinates of C. Okay, after this information, the examiner is asking you to find out the coordinates of C. Now, what can you tell about C? कौन कौन सी लाइंस का इंटरसेक्शन है? AC and BC intersection point जब भी आपको निकालना है, solve the two equations simultaneously. We have the equation of AC, we have the equation of BC as well. So equation of BC is y equals 1/2x plus 11/2. So let's just tag this as equation 1, and y equals to x minus 1. That is the equation of AC. Tag this as equation 2. So substitute equation 2 in 1. So x minus 1 equals to 1/2x plus 11/2. Okay. So x minus 1/2x is equals to 11/2 plus 1. 1/2x equals 13/2 and x is equals to 13. ये 2 is 2 से cancel हो जाएगा. ठीक हो गया? आपके पास x coordinate आ गया, which is 13. Now we need to work out the y coordinate. इस x को आप equation 1 में put करें या 2 में put करें, because this point is on equation 1 and on equation 2 as well. तो आपकी मर्जी, आप जिसमें मर्जी put कर लें. किस में put करें? 2 में put कर लेते हैं. So आप लिखेंगे therefore y equals to 13 minus 1, which is equals to 12. Therefore C is going to be 13 comma 12. इधर डायग्राम पे भी लिख लिया, नीचे आंसर स्पेस में भी लिख लिया. तो हमने C के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए. दिस इज डन एज वेल.
The parameter of the rectangle A, B, C, D. Parameter की definition क्या होती है? What do we mean by a parameter? We add up all the sides together. Is it dim enough? It's bright. Better. Okay. Parameter of A, B, C, D. अब A, B, C, D मतलब हमने A, B की length, B, C की length, C, D और इन सबको add करना है. It's a rectangle. We don't need to calculate all the sides. Whatever the length AD is, BC is going to be same, and whatever the length AB is, CD is going to be the same. आपके पास ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे. बी और सी दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ से आपके पास उसका भी लेंथ आ जाएगी. So I'm going to erase this part of the working so that I can quickly work out the distance. Okay, so AB, distance AB, that would be y2 minus y1 whole squared. So 2 minus 1 whole squared plus x2 minus x1 whole squared. Sorry, it was 2 minus, not 1. 2 minus 6 whole squared. 2 minus 6 whole squared plus 3 minus 1. x2 minus x1, 3 minus 1 whole squared, and then square root. We cannot cancel out these squares with the root because these are two terms. We will only cancel out the squares with the root if there are factors inside. Okay, so 2 minus 6 is minus 4. Minus 4 squared is 16 plus 16. Okay, 3 minus 1 is 2. 2 squared is 4. So it's root of 20. So AB is root of 20, and root of 20 can be written as 2 root 5. आप इसको कैलकुलेटर पे करें. Exact value is 2 root 5. Do not convert into the decimal as of yet. कौन सा? नहीं नहीं, कल वो एक्चुअली आई जस्ट रियलाइज कि वो जो माइक हम लगाते हैं ना, वो माइक थ्रू नहीं हो रहा उससे. वो ऐसे ही बस लगाया होता है. वो माइक लैपटॉप का कैच कर रहा था क्योंकि. अच्छा, लेकिन इधर मुझे मैम की आवाज नहीं आ रही. हफ्सा से समथिंग. Hello. हेलो, यस, ठीक है. ऑलराइट, इज क्लियर. 2 root 5. So I'm not going to convert into the decimal as of yet. I'll leave it in the exact value form because this is the root of 5. Inside the root you have a non-square number, so it is going to give you a non-terminating and non-recurring number, irrational number है. तो हमें round off नहीं करना, अभी हमें exact form में रखते हैं. अच्छा, a b आपके पास आ गया 2 root 5. Now exactly in the same way we'll work out the value of b c. इसको हम x2 y2 बोल देते हैं. So y2 minus y1, so 12 minus 6 whole squared plus x2 minus x1, 13 minus 1 whole squared, and the square root. Okay, 12 minus 6 is 6. 6 squared is 36. 13 minus 1 is 12. 12 square is 144. And this would be equals to 144 plus 36, 180. And this is equals to 180. And what is the exact value of 180? 6 square root 5. 6 square root 5. ठीक हो गया? This is 6 square root 5. This is BC. Okay, now we know the parameter would be 2 times the length plus 2 times the width, isn't it? Two lengths which are exactly the same and two widths which are exactly the same. So 2 times 6 root 5 plus 2 times width are 2 root 5. So
12 root 5 plus 4 root 5 which is 16 root 5। यहां से अब आप आएंगे उसके ऊपर नॉन एग्जैक्ट वैल्यू दे दें। अब नॉन एग्जैक्ट वैल्यू बताएं कितनी आ रही है? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, 35.8. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में या 35। 35.8. शाबाश, 35.8। इन्होंने यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ तो हम सेंटीमीटर नहीं लगा देंगे, हमने क्या लिख देना है? सिंपल यूनिट्स। ठीक हो गया? तो उसने हमें यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ क्या है, तो हम सिंपल लिख देंगे यूनिट। अगर एरिया होता तो यूनिट स्क्वायर्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया है। We will try not to attempt the complete question after this। हम सिर्फ प्लान डिस्कस करते हैं। जहां प्रॉब्लम आया you need to tell me ताकि मैं उसको अटेम्प्ट कर सकूं। जहां आपको लगा आपसे नहीं होगा आप मुझे ओपनली बता सकते हैं। We will do it। Okay, the line L1 has the equation 2x plus y। So okay, there is no diagram for question number 2। This diagram is for question 3। We're talking about question number 2। There is no diagram, so let's just make a diagram of our own। हम खुद से बना लेते हैं यहाँ पे डायग्राम। So this is line L1 and it has an equation 2x plus y equals a। Okay, the line L2 passes through the point A। Okay, there is another line L2, it passes through the point A which is 7 4 and is perpendicular to L1। This is L2। Now this is important point। मैंने अक्सर स्टूडेंट को देखा है इसी क्वेश्चन में वो ये समझते हैं कि this A is the intersection of L2 and L1। If you read the question, examiner hasn't mentioned about it। It could be, but it is not obvious। ठीक है? It could be the intersection, but the examiner has not mentioned it, so we are not going to assume that। So he's saying that L2 is passing through this point, so A could be anywhere on L2। So let's suppose A is over here, which is 7 4, okay, and is perpendicular. Yes, I have drawn the two lines perpendicular। Find the equation of L2। We're supposed to find out the equation of L2। Okay, equation के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं आपको? Point and gradient। Do we know a point जिसमें से L2 पास कर रही है line? Yes, and that is point A। L2 is passing through the point A। Gradient हमें directly नहीं पता, but we know examiner has told us that L2 is perpendicular to L1। So we need to extract the gradient from the equation of L1, which is already given। We cannot extract it the way it is written. We need to write it down in the standard form first, which is y equals to mx plus c। You should be able to do it in your head। What is the gradient of L1? Arrange it in your head and tell me। शाबाश। क्या हो गया ग्रेडियंट? -2। इसका Minus 1 ग्रेडियंट हो by गया 2. आपके पास। यस, इसका ग्रेडियंट -2 हो गया और L2 का क्या हो जाएगा ग्रेडियंट बेटा? 1 by 2. 1 ओवर, शाबाश, 1/2 आ गया इसका ग्रेडियंट। पॉइंट भी है, ग्रेडियंट भी है, इसकी इक्वेशन निकल आएगी। पार्ट 1 हो गया। ओके, गिवन दैट L1 and L2 intersect at point B। The two lines are intersecting at point B। Find the length of AB। Okay, always start from the question। What do you need in order to find out? Okay, how would you find out the length of AB? By using distance formula। And what do we need to plug in into the distance formula in order to find out A and B? The coordinates of A and the coordinates of B. We have the coordinates of A, but we don't have the coordinates of B. If you go back, L1 and L2 intersect at point B। B is the intersection of L1 and L2। Now, here is an added step that how would you find out the intersection of A and B? By solving the two equations simultaneously। You have the two equations in part 1, you've worked out the equation of L2, equation of L1 is given in the question, solve them simultaneously, you will have the coordinates of B। Once you have the coordinates of B,
Then you apply distance formula and find out the length AB. Clear? Okay, question number 3. The diagram shows a trapezium. Okay, this is the trapezium here now. Right. The diagram shows a trapezium ABCD in which BC is parallel to AD. Now, this is very key information. Which two lines are parallel and which two lines are going to be perpendicular? BC is parallel to AD is mentioned here. It's indicated in the diagram as well by using the arrowheads that these two lines are parallel. And angle BCD is equals to 90 degrees. So basically, this line here is perpendicular to both of these. Okay. All right. Coordinates of A, B, and D are this, and this respectively. Respectively means जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में ये है. So ये आपके पास A का कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये A के, ये B के और ये D के कोऑर्डिनेट्स आ गए. Find the equations of B, C and C, D. इक्वेशंस निकालनी है. अगेन इक्वेशंस के लिए वो चेक पॉइंट लिखा. पॉइंट चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए. सबसे पहले बी सी की बात करते हैं. बी सी में से कोई एक पॉइंट पता है? बिल्कुल पता है. बी पॉइंट हमें पता है. ओके, ग्रेडियंट पता है बी सी का? नहीं पता. डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते. इनडायरेक्टली कैसे निकालेंगे? अदर वे अराउंड. It's शाबाश. same इट as इज पैरेलल. AD's gradient. या इट इज गोइंग टू सेम एज द ग्रेडियंट ऑफ एडी. यहां से हम इसका ग्रेडियंट वर्कआउट करेंगे और आंसर आ जाएगा. ठीक हो गया? समझ में आ गया? तो ग्रेडियंट भी आ गया, पॉइंट भी आ गया. अच्छा, सी डी पे आ जाते हैं. सी डी में भी बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट है. ग्रेडियंट परपेंडिकुलर रिलेशन आ जाएगा इसका. वट एवर ग्रेडियंट ऑफ ए डी वॉज, जिससे आपने पिछली इक्वेशन निकाली है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल विल बी द ग्रेडियंट ऑफ दिस वन. तो पॉइंट भी है, ग्रेडियंट भी है. आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया. कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. आपने इक्वेशन निकाली है बी सी की और सी डी की. दोनों की इक्वेशन है सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ both the lines. Simultaneously solve करें, you will have the coordinates of C. हो जाएगा? Question number 4. अच्छा, ये थोड़ी सी quadratics आ गई, इसको छोड़ दें अभी. ठीक है. Question 5. Okay, before we jump to question 5, Hafsa, I need to show you the notes जो हमने कल पढ़ा. ये मैं आपको भेज भी दूंगा. ठीक हो गया? ये इसमें कुछ एक important information थी. Yeah. Shapes whose diagonals are perpendicular and then not perpendicular. स्क्वायर, रॉम्बस, काइट, इनके डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं. और जो रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम है, इनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते. और फिर उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन, शेप्स जिनके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन जो है मिड पॉइंट पे होता है, तो वो स्क्वायर, रॉम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है, मिड पॉइंट पे होता है. अब ये स्क्वायर और रोम्बस दो ऐसी शेप्स हैं, ये परपेंडिकुलर भी है और मिड पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करते हैं. तो इसका मतलब है इनके जो डायगोनल्स होंगे दे विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. तो ये थोड़ी एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, इससे काफी आसानी हो जाती है आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में. नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, दिस इज रोम्बस. सो रोम्बस के अभी हमने जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी नोट्स में से, उसमें रोम्बस एक ऐसी शेप है जिसके डायगोनल्स जो हैं एक तो मिड पॉइंट पे मीट करेंगे और दूसरा एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे. ठीक हो गया? तो ये दोनों इस पे आते हैं. ओके, द पॉइंट B and D have the coordinates. They have given you the coordinates of B and D. यहाँ पे A lies on the x-axis. Okay, this is a key information. X-axis पे क्या चीज जीरो होती है? हमने उस दिन अपने नोट्स में लिखा था y जीरो होता है. सो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसका एक कोऑर्डिनेट आपको पता है. सिर्फ आपको क्या नहीं पता इसमें? x नहीं पता. ठीक हो गया? ऑलराइट. इट लुक्स लाइक द क्वेश्चन वी डिड यस्टरडे बट इट इज एक्चुअली डिफरेंट. मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया तो आइडिया हुआ है. ओके, द मिड पॉइंट ऑफ BD इज M. Find by calculation the coordinates of each M, A and C. Okay, M is the midpoint of B and D, so midpoint निकालना है आपने, simple. So 2 and 6 is 8. 8 का half क्या आएगा बेटा?
4 and 10 and 2 is 12, इसका हाफ 6 आ गया। तो m के कोऑर्डिनेट्स आपने, लेकिन आपने वर्किंग शो करनी है, इसने यहाँ मेंशन किया हुआ है, शो बाय कैलकुलेशन, ही नीड्स टू सी द वर्किंग। ठीक हो गया? अच्छा। The coordinates of each m, okay, m is done। a, all right, a के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? इक्वेशन भी नहीं है। ओके, रोम्बस है। रोम्बस है ना, रोम्बस की चारों साइड सेम होती हैं। सो आपके पास ये वाला है पॉइंट पी, डी भी है। डिस्टेंस ए डी और डिस्टेंस ए बी इक्वल होगा, वहां से आप इक्वेशन बना लेंगे। और इक्वेशन दो वेरी डिस्टेंस में, डिस्टेंस फार्मूला में y भी आता है और x भी आता है, लेकिन इसमें लकीली हमारे पास y है, तो वेरिएबल a की होगा x वाला, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया? अगर ये y ना होता फिर हम ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कर सकते हैं हम यहाँ से। बिल्कुल। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, हमारे पास इसका ग्रेडियंट आ जाएगा और फिर इसकी इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल, इसकी इक्वेशन में हम y इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। एक्सीलेंट, बल्कि वो आप वाला मेथड मुझे ज्यादा शॉर्ट लग रहा है। ठीक हो गया? एक्सीलेंट। अच्छा जी, चलें जी, देखें जी। अब इसको हफ्सा, हैव यू गॉट अंडरस्टूड बोथ द अप्रोचेस? Yes. ओके, सो Both as in the first is the distance method and the second was? second was, we find out the equation of the perpendicular bisector, this one, Okay. because we know that the two diagonals, they are perpendicular to each other. So I have the point, midpoint, and we can work out the gradient from here. तो equation निकल आएगी। Once I have the equation of this, I know that A is on the perpendicular bisector whose y is 0. Against y, where against the value of y where it is 0, we can find out the value of x. Okay, Okay. so let's Yes. just do that. Perpendicular bisector के लिए gradient पहले निकाल देते हैं। So m of BD, that will be equals to 2 minus 10 over 6 minus 2, negative 8 over 4, which is negative 2। यहाँ पे अब आपने मेंशन करना होगा, बताना होगा, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ। आप ठीक है, एज m of BD, oops, not m of, as BD is perpendicular to AC, therefore m of AC will be equals to plus 1 over, we have the gradient, we have the point, so y minus y1 equals m into x minus x1. So y equals 1 over 2x minus 2 plus 6. 1 over 2 into minus 4 is minus 2. This was minus 6 when I moved there. It is plus 6. Y equals 1 over, ठीक है, वहां नहीं, 1 over 2 plus 4, 1 over 2x, sorry, 1 over 2x plus 4। ओके, a फाइंड करना है, इधर आपके पास x फाइंड करना है, y 0 है, इधर y 0 पुट कर दें, because this point is on AC line as well, and this is the equation of line AC। On this line I need to find out the value of x where y is 0, so this is going to be negative 8। यहाँ से आप इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू -8 आती है, so basically x is -8। a के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। Is this clear, Hafsa? Yes, sir. Once you have the coordinates of a, we know that diagonals of rhombus, they intersect at midpoints. So basically m is the midpoint of a and c as well. So we know a, हम इस पे रिवर्स midpoint वाली अप्रोच अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम दिमाग में कर लेते हैं, फिर हम इसको वर्किंग करते हैं। ठीक हो गया?
पहले x निकालते हैं। -8 से 4 कितना डिस्टेंस बनता है? 8, ओ सॉरी नॉट 8, 12, 12 बनता है। -8 से 4, लाइक 4 माइनस 8, 4 प्लस 8, 12 आता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर 4 से आगे 12 ऐड कर दें, कितना आ गया? 16। ठीक हो गया। और इसी तरीके से 0 से 6, 6 है, तो 6 से आगे 6 ऐड करेंगे, 12 आ जाएगा। तो ये हमने मेंटली किया है, बट वी वर सपोज टू डू कैलकुलेशंस। तो अब कैलकुलेशंस जो करने के लिए, वी नो दैट द x कोऑर्डिनेट ऑफ a plus the x coordinate of c divided by 2 will give us the x coordinate of the midpoint, which is 4. So x will be equals to 8 plus 8, which is 16. Exactly in the same way, we will work out the coordinates, the y coordinate for the point C. Clear? This was question number 5. Question number 6. 3 points have the coordinates A, B, and C. The perpendicular bisector of AB meets the line BC at D. The equation of the perpendicular bisector of AB is, okay, this is the format उसने दिया हुआ। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। There is no diagram and क्वेश्चन पढ़ के फौरन से समझ में नहीं आ रहा, so let's take it slowly. So there are 3 points A, B, and C. The perpendicular bisector of AB. So let's suppose this is A and this is B. The perpendicular bisector is going to be the line passing from the midpoint of A and B and at a 90-degree angle. The perpendicular bisector of AB meets the line BC. Okay, there is another line BC. So let's suppose C is the point over here. This is B. Let me use a different color pen here. Okay, let's suppose this is point C over here. BC line is this one. The intersection is happening at point D. Okay. CB and this line, are they perpendicular? No, they haven't mentioned. What two lines were perpendicular? AB and the perpendicular bisector itself. Okay, first question. The equation of perpendicular bisector of AB. AB का जो perpendicular bisector है उसकी equation निकालनी है. So equation के लिए so इस line, the line in the purple, इसकी आपको equation चाहिए. Point. Do we have the point? We don't have it, but we can find it out. A and B का midpoint आ जाएगा. So जल्दी से कर लेते हैं. A और B का midpoint आ जाएगा 5 and 8. 10 का half 5, 16 का half 8 आ गया. तो ये आपके पास आ गया 5 and 8. ओके, नेक्स्ट इज ग्रेडियंट। तो ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा इसका। ठीक हो गया, हो जाएगा। बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, इक्वेशन का फॉर्मेट उसने दे दिया, तो यू नीड टू गिव योर फाइनल आंसर इन दिस फॉर्मेट, लाइक द कांस्टेंट ऑन वन साइड, वेरिएबल्स ऑन वन साइड। The coordinates of D. Now D is the intersection of BC and the perpendicular bisector line. You have the equation of this perpendicular bisector जो आपने पिछले part 1 में find out की है, this one. BC line की equation नहीं है, but we can find out. We have the point and we can work out the gradient from here as well. ठीक हो गया? और फिर once you have the equation of BC, solve the two equations simultaneously, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? समझ में आया? Yes, sir. Do you want to give a shot to this question 8 on your own? ठीक है, चलें ट्राई करें, शाबाश।
तो हमने 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। मोर और लेस तकरीबन सब में यही अप्रोचेस अप्लाई होती हैं। Sorry, I can't see the question. Okay, let me just screenshot. With the class actually late. I think it's here since yesterday. Bottle भी ले. बस I don't know. अच्छा अच्छा बस ठीक है ये क्वेश्चन कर रहे थे वैसे हो गया. Yeah. I have a look at it. Done.
चलें ठीक है, कल कल बता देना। ये अटेम्प्ट करना, मैं ये वर्कशीट अब दे दूँगा। सही है? ठीक है हफ्सा बेटे? Okay, sir. चलें। ओके, थैंक यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Okay, sir.